Hello friends, welcome back to the course AMVI Mains Examination. So we are discussing module number 3, that is Theory of Machines. This is lecture number 7. So in previous lecture we have discussed velocity analysis and we have seen different methods to find velocity like instantaneous center method and relative velocity method. So in today's lecture we are going to see acceleration analysis. So let us move forward. So before going to the acceleration analysis, let us consider one method which shows why velocity is perpendicular to the given link and what about acceleration. So that method is known as complex algebra method. So यहाँ पे आपको formulas मिलेंगे. So let us consider one vector OM which is inclined at angle theta to given coordinate system and whose magnitude is capital R and it is rotating anticlockwise with angular velocity omega. Now its position can be given as vector r bar is equal to r into e raised to I theta. So we know that in position vector the first term is its magnitude, that is capital R, and second is its direction, so it is inclined at angle theta. Okay, so this is position vector or displacement vector. If you want to find velocity, हमको इसका डेरिवेटिव लेना है. डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव आएगा वेलोसिटी. सो वेलोसिटी ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू o इज इक्वल टू r ओमेगा e रेज टू I थीटा प्लस पाई बाई 2. यहाँ पे फर्स्ट टर्म रहेगा इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज r ओमेगा. सो हमें पता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड r ओमेगा होता है, राइट. एंड सेकेंड इज इट्स डायरेक्शन, सो इट्स डायरेक्शन इज थीटा प्लस पाई बाई 2. सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सो वेलोसिटी का डायरेक्शन है थीटा प्लस पाई बाई 2. सो परपेंडिकुलर टू गिवन लिंक in the direction of rotation as it is shown in this figure. So this formula is showing that velocity is perpendicular to given link in the direction of rotation. अगर इसका और एक बार डेरिवेटिव लेते हैं हम तो हमें मिल जाएगा acceleration, because rate of change of velocity is nothing but acceleration. So acceleration of m with respect to o. तो हमें यहाँ पे दो टर्म्स मिलते हैं. So first is r omega square e raised to I theta plus pi plus r alpha e raised to I theta plus pi by 2. So two types of acceleration we are getting here. So first is radial or centripetal acceleration और उसका मैग्नीट्यूड रहेगा r omega square and its direction is theta plus pi. So in third diagram यहाँ पे आप देख सकते हैं theta in the direction of rotation plus pi means 180 degree. There will be a radial or centripetal component of acceleration which is shown here. So it is exactly opposite to given link, as it is 180 degree, means it is parallel to given link, you can say that. And second component is r alpha, which is known as tangential component of acceleration, whose direction is theta plus pi by 2. So theta plus pi by 2 in direction of rotation means it will be a perpendicular to given link. So this is tangential component of acceleration whose magnitude is r alpha. So अगर आप velocity and acceleration diagram compare करेंगे तो velocity is also perpendicular to given link and tangential component of acceleration is also perpendicular to given link. Tangential component of acceleration is parallel to velocity of that link and perpendicular to given link, and centripetal component of acceleration is perpendicular to the velocity and parallel to given link. Okay, I think it is clear. So acceleration analysis, so यहाँ पे आपको डिटेल में दिया है two components. So acceleration of a particle whose velocity changes both in magnitude and direction at any instant has two components. First is centripetal or radial, second is tangential component. So centripetal यहाँ पे देख सकते हैं आप, it is perpendicular to the velocity of the particle at given instant और it is parallel to the given link. So उसका formula रहेगा v square upon ab और it is r omega square, but after modifying it will be a v square upon ab. So velocity of that link
अपॉन AB। यहाँ पे आप देख सकते हैं we have considered one rigid link, वहाँ पे 2 पॉइंट कंसिडर किए हैं A and B। So we are interested in finding acceleration of B with respect to A, so we have joined line AB। So acceleration of B with respect to A, first radial component, it will be a V square upon AB, so it is shown here, radial component of B with respect to A। And second is tangential component, which is parallel to the velocity of the particle at given instant or perpendicular to the given link। So parallel to velocity ऐसा रहेगा, velocity of BA, उसके डायरेक्शन में इसका tangential component of acceleration रहेगा। इसका acceleration diagram कैसे ड्रॉ करते हैं, let us see। So we are interested in finding acceleration of B with respect to A। So while drawing acceleration diagram, first we will mark A dash point, small a dash point, okay। First we are going to show radial component, so as we know that it is parallel and 180 degree to given link। Now as AB is rotating anti-clockwise, so anti-clockwise theta plus 180 degree means on this side there will be a radial component। So parallel to given link, you can draw here from A dash point parallel to link AB in downward direction, B point will be at 180 degree from about A, that is important। So A dash point say in downward direction, we have marked radial component and just give name X। Now tangential component, from point X mark tangential component perpendicular to given link or parallel to the velocity, and its magnitude will be R alpha as shown here। Just mark B dash point, now join A dash B dash, this will be the acceleration of given link, which is vector sum of radial component and tangential component। So its direction will be from A dash to B dash, this is the total acceleration of link AB। Now let us discuss one problem based on this। So statement is given here, a crank of a slider crank mechanism rotates clockwise at constant speed of 300 rpm। The crank is 150 mm and the connecting rod is 600 mm, उसके लेंथ दिए हैं हमको। Determine linear velocity and acceleration of midpoint of connecting rod and angular velocity and acceleration of connecting rod at if crank is inclined at 45 degree from inner dead center। So यहाँ पे हमको देखना है how velocity and acceleration diagrams are drawn। So for that, first we have to draw the space diagram based on given dimensions, like crank is given 150 mm, is inclined at 45 from IDC, so यहाँ पे 45 degree पे crank है connecting rod। Also इसका जो मिड पॉइंट है कनेक्टिंग रॉड का, वहां पे भी हमको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूछा है। सो इट इज रिक्वायर्ड टू मार्क मिड पॉइंट, डी मार्क किया है यहाँ पे। नाउ टू ड्रॉ द वेलोसिटी डायग्राम, speed of input link is given, that is n 300 rpm। So based on that we can find velocity of input link OB with formula V is equal to R into omega। So R is length of OB into omega is 2 pi n upon 60। So based on that value, let us start with velocity diagram। So first we mark fixed points at one location with small letters। So O is fixed point here, so O, from O first velocity of OB perpendicular to given link in direction of rotation, as it is rotating clockwise, so in this direction there will be a velocity। So perpendicular to OB with given magnitude, B point will be marked। Next is connecting rod। So B point is with us, we can draw perpendicular to connecting rod, as we are not knowing its magnitude, we are just knowing its direction which is perpendicular। So हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड को। नाउ गो टू नेक्स्ट लिंक, नेक्स्ट इज द पिस्टन। पिस्टन का वेलोसिटी इज ऑलवेज पैरेलल टू इट्स लाइन ऑफ एक्शन। सो ये जो दिख रहा है आपको OA इज अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ पिस्टन, सो इसको पैरेलल रहेगा फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, O इज फिक्स्ड पॉइंट। सो ड्रॉ लाइन पैरेलल टू OA, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया। ये दो लाइन जहाँ पे मीट होते हैं दैट विल बी अ पॉइंट A। सो ज्वाइन BA and OA। BA, it will be a velocity of link
A with respect to B, and OA is the velocity of link A, that is piston, with respect to O. Okay. Now velocity at midpoint. So we know that how to find velocity of any midpoint or any point on given link. जिस रेशो में O स्पेस डायग्राम में लाई हो रहा है, उसी रेशो में आपको वेलोसिटी डायग्राम में वो दिखाना है. ये केस में AB के मिड पे है, तो इन वेलोसिटी ऑल्सो स्मॉल AB के मिड पे ही ये D पॉइंट रहेगा. ओके, सो AB का डायरेक्टली मिड पॉइंट पे हमने D पॉइंट मार्क किया. सो ज्वाइन OD, सो OD विल बी द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट D. सो ऐसे वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. नाउ एक्सेलरेशन डायग्राम. फर्स्ट स्टेप इज सेम, मार्क फिक्स्ड पॉइंट्स with small letters and dash O dash. Now हर एक लिंक का रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट रहेगा. तो फर्स्ट लिंक दैट इज OB लिंक, in statement it is given that it is rotating with constant speed. So as there is a constant speed, its angular acceleration will be 0, means alpha will be 0. So we know that alpha is there in term tangential acceleration, whose magnitude is R alpha. So there will not be tangential component for OB link as it is rotating with constant angular velocity. Okay, so that is in the case of first link only. Afterwards you have to mark both components for each and every link. Okay, so first point O dash. So here there will be only a radial component which is 180 degree, means if you are interested in finding acceleration of B with respect to O, B will go at 180 degree about O. So OK downward direction में B dash will be there, that will be the radial component. Now next link is connecting rod. So acceleration of A with respect to B, उसका first radial component will be 180 degree. A point B के 180 degree जाएगा, means like this. So B के this side, from B this side, its radial component will be there. Whose magnitude we are knowing V square upon R. Okay, उसका magnitude पता है, direction पता है. We have marked radial component, we have given small x name because we have to show tangential component also, whose magnitude is not known and its direction is known. It is perpendicular to given link. So from point X we have drawn line perpendicular to given link, or directly you can draw perpendicular to B dash X because it is parallel to given link. Perpendicular, we don't know where it is. Now go to next link. Next is piston. Now we know that piston is sliding linearly, so its acceleration will be also parallel to line of action. Its velocity was also parallel to line of action. So keep in mind, piston का velocity and acceleration parallel to the line of action. So from O dash, line parallel to OA, now drawn. ये दो लाइन जहाँ पे meet हो रहे हैं, that will be a point A dash. So join B dash A dash with solid line because it is a total acceleration of B dash A dash, which is vector sum of radial component B dash X plus tangential component X A dash. And O dash A dash join with solid line, it is a acceleration of piston. Now acceleration of midpoint, सेम रेशो पे आपको मिड पॉइंट मार्क करना है. ओ लिंक पे A dash B dash के मिड पे D dash पॉइंट आएगा और उसका एक्सेलरेशन O dash D dash join O dash D dash, that will be acceleration of midpoint of connecting rod. So this is how we find velocity and acceleration of given mechanism. So why I have explained this method here, because there may be different questions based on this, so you should be able to answer all that questions. Okay, hope it is clear. Now next is the Coriolis component of acceleration. So when a point on a link is sliding along another rotating link, such as in quick return motion mechanism, so it is known as Coriolis component of acceleration. Means if one link is rotating and another link, that is slider, is sliding simultaneously on that given rotating link, then there is a Coriolis component of acceleration. You can observe it in quick return mechanism. वहाँ पे हमको पता है कि स्लाइडर स्लाइड होता है on a rotating link. Okay,
So this tangential component of acceleration of, you can see here, so here slider is B and coincident point is C, ये जो लिंक है जो टर्न हो रहा है उसका और स्लाइडर का कोइंसिडेंट पॉइंट है C. So this tangential component of acceleration of slider B with respect to coincident point C is known as Coriolis component of acceleration. It is always perpendicular to the link. जो लिंक टर्न हो रहा है उसको परपेंडिकुलर रहेगा. सो हम कह सकते हैं कि ऐसे केसेस जहां पे दो मोशन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं वहां पे Coriolis कंपोनेंट रहेगा एंड दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द गिवन लिंक. उसका मैग्नीट्यूड है 2v into ओमेगा. सो Coriolis component of acceleration is equal to 2v omega. So यहाँ पे v is nothing but sliding velocity of point C and omega is nothing but angular velocity of given link which is turning. Okay, so this is how we find Coriolis component of acceleration. So यहाँ पे MCQs either formula पे रहेंगे या फिर the mechanism where this Coriolis component will be applicable, which is quick return mechanism. There are 4 cases. So let us see first case. So if link is rotating in anti-clockwise direction and slider is sliding upward, in that case its Coriolis component will be in left side direction perpendicular to given link at point C. Okay. Second case, if link is rotating clockwise and slider is sliding upward, in that case Coriolis component will be right side direction. Third case, link is rotating anti-clockwise, slider is sliding downward, in that case also the Coriolis component will be at right side as shown here. Fourth case, link is rotating clockwise and slider is sliding downward, यहाँ पे component left side को रहेगा. So ये चारों cases पे भी MCQs रह सकते हैं. Okay, hope it is clear. Now let us see one example. So here crank and slotted lever quick return mechanism is given. कुछ dimensions and all things are given. यहाँ पे crank जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो you have to decide direction of Coriolis component. As crank is rotating in anti-clockwise direction, link OC will also rotate in anti-clockwise direction like this. So ये जो link OC है वो हमको कंसिडर करना है. यहाँ पे दिखाया है OC. So it is rotating in anti-clockwise direction because crank is forcing it in anti-clockwise direction and crank is taking this slider downward. Okay, so यहाँ पे link is rotating anti-clockwise and slider is moving downward. So Coriolis component कहाँ पे रहेगा? In right side direction perpendicular. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हैं शो किया है यहाँ पे. So starting with, we know that how to draw acceleration diagram. First fixed point mark करो एक जगह पे O dash A dash. Next is input link crank link A B. So उसका radial component A dash B dash. यहाँ पे अभी लिंक है स्लाइडर एंड कोइंसिडेंट पॉइंट. सो यहाँ पे आपको Coriolis कंपोनेंट दिखाना है OB इन डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट साइड. सो पहले हम Coriolis कंपोनेंट दिखाएंगे यहाँ पे. सो Coriolis कंपोनेंट इज शोन टुवर्ड्स पॉइंट B डैश विथ 2v ओमेगा मैग्नीट्यूड. फिर यहाँ से B डैश का वेलोसिटी, दैट इज स्लाइडर का वेलोसिटी पैरेलल टू लाइन ऑफ एक्शन. सो यहाँ पे दिखाया है, आप देख सकते हैं. सो B डबल डैश पॉइंट इज मार्क्ड हियर. इसका डायरेक्शन पता है हमें, इट इज पैरेलल बट मैग्नीट्यूड नॉट नोन. सो ऐसे ड्रॉ करके रखा है हमने. फिर नेक्स्ट है O B डैश लिंक. O B डैश का रेडियल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन ओके इस साइड. सो Y पॉइंट रेडियल कंपोनेंट. यहाँ से टेंजेंशियल कंपोनेंट परपेंडिकुलर. सो ये दो लाइन जहां पे मीट हो रहा है दैट विल बी अ B डबल डैश पॉइंट. सो दैट इज B डैश पॉइंट इन एक्सेलरेशन डायग्राम B डबल डैश. सो O B डैश के एक्सटेंड पे C पॉइंट है. सो सेम रेशो में आपको सेम प्रोपोर्शन में O B डैश के नेक्स्ट आपको C डैश पॉइंट दिखाना है. सो C डैश पॉइंट यहाँ पे होगा. तो CD लिंक है
acceleration of d with respect to c, d ck 180 degree आएगा, ck 180 degree z point, this will be radial component, tangential component perpendicular, इसका मैग्नीट्यूड पता है हमें रेडियल का, तो वह मार्क इट. नाउ टेंजेंशियल मैग्नीट्यूड पता नहीं है, डायरेक्शन पता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. नेक्स्ट लिंक स्लाइडर, स्लाइडर इज स्लाइडिंग along this line, so its acceleration will be parallel to this line from fixed point. So fixed point से parallel line draw किया, ये दो लाइन जहाँ पे meet हो रहे हैं, that will be a d dash point. Join c dash d dash, it will be a total acceleration of link cd, and o dash d dash, it will be the acceleration of slider. So this is how acceleration diagram is drawn in this case. Hope it is clear. Acceleration analysis, into that Coriolis component of acceleration also. Yes. Now next is Klein's construction. So it is one of the graphical method used for determining velocity and acceleration of reciprocating engine mechanism only. So very simple and less time consuming method to draw velocity and acceleration of slider crank mechanism. And in this case, or in this method, you can draw velocity and acceleration in single diagram only. No need to draw separate velocity and acceleration diagram as that of relative velocity and acceleration method. So let us see how to draw Klein's first velocity diagram. So let us consider one reciprocating engine mechanism or a slider crank mechanism where OC is a crank which is inclined at angle theta. From IDC, crank is rotating in clockwise direction with angular velocity omega. Connecting rod CP, piston P, which is sliding along OP, line of stroke. Now to draw velocity diagram, simple two steps are there. First is to draw the line perpendicular to line of stroke from point O. So यहाँ से आपको एक vertical line draw करना है. And second, extend connecting rod CP. Extend करो, ये दो जहाँ पे meet होंगे, that will be a point M. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक्सटेंड किया, कनेक्टिंग रॉड एक्सटेंड किया, आपको मिल गया M पॉइंट. सो OCM, दिस इज द वेलोसिटी डायग्राम. कैन यू बिलीव इट? यस, इट इज अ वेलोसिटी डायग्राम. सो लेट अस सी हाउ इट इज अ वेलोसिटी डायग्राम. सो इस स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का वेलोसिटी डायग्राम विथ हेल्प ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी मेथड विल ड्रॉ. सो फर्स्ट फिक्स पॉइंट O, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट इनपुट लिंक का वेलोसिटी पता है तो इसका वेलोसिटी मार्क कर सकते हैं हम. OC परपेंडिकुलर टू OC, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये डायरेक्शन में रहेगा. सो O से उसका मैग्नीट्यूड OC मार्क किया. नेक्स्ट कनेक्टिंग रॉड, उसका डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड पता नहीं है. सो C से लाइन परपेंडिकुलर टू दी CP ड्रॉ किया. नेक्स्ट पिस्टन, लाइन ऑफ स्ट्रोक को पैरेलल रहेगा. सो O से लाइन ड्रॉ किया पैरेलल. दो पॉइंट जहां पे मिले, दैट विल बी अ P पॉइंट. वी नो दिस प्रोसीजर. So this is the velocity diagram with help of relative velocity method. इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से रोटेट करना है. We have rotated it with 90 डिग्री in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. So आपको मिल गया OP1C1. Now this OP1C1 is equivalent to this OMC. That's why it is known as velocity diagram of given mechanism. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं OP1, which is nothing but OM, C1P1 nothing but CM, C1O is nothing but CO, and we know that formula of velocity is R into omega. So ये दोनों को हमको कंपेयर करना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं OC1 is nothing but OC1 upon its length OC is equal to omega. So OC1 is nothing but velocity of crank. So velocity of crank is nothing but R into omega. So OC into omega. Next is OP1, which is nothing but OP or nothing but velocity of piston. OP1 upon, यहाँ पे OP1 OM से equivalent है. So OP1 upon OM is equal to omega. And next C1P1 equivalent to CM. C1P1 upon CM is equal to omega. So यहाँ पे आप देख सकते हैं OC1 is nothing but velocity of crank or velocity of C with respect to O upon its length OC is equal to
OP1 nothing but velocity of P with respect to O, this slider का velocity upon OM is equal to C1 P1 nothing but velocity of connecting rod, velocity of P with respect to C divided by Cm is equal to omega. So by using this formula you can find velocity of any link in given reciprocating engine mechanism. So it is very simple method. ओमेगा हमको दिया जाएगा इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट. पिस्टन का वेलोसिटी चाहिए तो यू कैन कंपेयर वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ अपॉन ओ एम इज इक्वल टू ओमेगा. ओमेगा पता है, मल्टीप्लाई बाय ओ एम, लेंथ ओ एम, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ piston. Okay, now let us see how to draw Klein's acceleration diagram. Here also we will draw acceleration diagram with help of relative acceleration method. So fix the point O dash. So crank है OC, यहाँ पे OC का रेडियल कंपोनेंट पहले मार्क करना है हमको. So C का रेडियल कंपोनेंट कैसा रहेगा, as it is rotating in clockwise direction. So C को उठा के 180 डिग्री पे रखना है about O. O dash के डाउनवर्ड साइड में आएगा C dash. Consider in this case there is no tangential component, there is only radial component to given or input link. So C dash मार्क किया हमने. Now connecting rod का acceleration, so acceleration of P with respect to C. So from C on this side there will be radial component of Cp whose magnitude is r omega square or v square upon r. वेलोसिटी पता है हमें उसका, डिवाइडेड बाय लेंथ r. वो पॉइंट x मार्क किया. नेक्स्ट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड पता नहीं है, डायरेक्शन पता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. नेक्स्ट लिंक लिया पिस्टन, पिस्टन का एक्सेलरेशन मार्क किया. स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक. ये दो लाइन जहां पे मीट हो रहे हैं दैट विल बी अ p डैश पॉइंट. ये दो लाइन जहां पे मैच हो रहे हैं वो रहेगा p डैश पॉइंट. सो ज्वाइन o डैश p डैश, इट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन, and C dash P dash, it will be the acceleration of connecting rod, which is vector sum of radial and tangential component. So come back to the Klein's diagram. So velocity diagram हमने draw किया है OCM. Now to draw the acceleration diagram, easy procedure है. So first step is to draw a circle considering C as center point and CM as a radius. तो ये circle हमने draw किया. Second step, कंसिडर सेंटर एज अ मिड पॉइंट ऑफ कनेक्टिंग रॉड. सीपी का मिड पॉइंट कंसिडर करो, जहां से सपोज दिस इज पॉइंट ए. सो ए सी रेडियस कंसिडर करके हमको और एक सर्कल बनाना है. सो सेंटर एज ए पॉइंट ए सी, ये सेकंड सर्कल हो गया. दिस इज सेकंड स्टेप. दो सर्कल जहां पे मीट हो रहे हैं उनको नाम देना है के एंड एल. ज्वाइन लाइन के एल, एक्सटेंड इट अप टू लाइन ओपी. सो ये के एल कनेक्टिंग रॉड को जहां पे मीट हो रहा है उसको नाम देना है Q, एंड ए के एल ओपी लाइन को जहां पे मीट हो रहा है वहां पे नाम देना है N. तो दिस क्वाड्रिलेटरल OCQN इज नथिंग बट इट्स एक्सेलरेशन डायग्राम. इसके साथ कंपेयर करना है हमें. जहां पे देख सकते हैं आप स्मॉलेस्ट लेंथ इज C dash X, सो इट विल बी इक्वल टू CQ. उसके अपोजिट का लेंथ ON इज इक्वल टू O dash P dash. Next OC equivalent to O dash C dash and QN equivalent to P dash X, and we know that acceleration is r omega square. So जैसे वेलोसिटी में हमने ओमेगा से कंपेयर किया था, यहाँ पे आपको ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करना है. So let us see O dash C dash, first term O dash C dash equivalent to OC, O dash C dash upon OC is equal to, next is C dash X which is equivalent to CQ. C dash X upon CQ is equal to, next is XP dash which is equivalent to QN divided by QN is equal to O dash P dash which is equivalent to ON or NO is equal to omega square. यहाँ पे O dash C dash is nothing but radial component of OC. Next C dash X is nothing but radial component of connecting rod PC. Next XP dash is nothing but tangential component of connecting rod, and O dash P dash is nothing but acceleration of piston PO is equal to omega square. किसी भी लिंक का अगर acceleration फाइंड करना है तो we have to take that term, compare it with omega square,
ओमेगा हमको पता है, सो यू कैन फाइंड दैट एक्सेलरेशन। और अगर आपको किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड करना है ऑन कनेक्टिंग रॉड, सपोज ये पॉइंट है ए, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो इसको पैरेलल टू ओपी एक्सटेंड करो अप टू लाइन सी एन को ज्वाइन करना है, उसको नाम दे दो ए डैश, सो ज्वाइन ओ ए डैश, सो इसका एक्सेलरेशन रहेगा इस पॉइंट का ओ ए डैश इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द केस वेयर क्रैंक इज रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ये क्रैंक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट नहीं हो रहा है तो इन दैट केस देयर विल बी अ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्रैंक आल्सो। ओ केस में यहाँ पे उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट यहाँ पे दिखाया जाएगा ओ, उसको परपेंडिकुलर रहेगा उसी को O1, सपोज उसको नाम दिया O1, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पता है हमें, जो O1 पॉइंट रहेगा यहाँ पे उसको स्ट्रेट एक्सटेंड करो यहाँ तक, यहाँ पे नया नाम दे दो N1, सो देन इट्स एक्सेलरेशन डायग्राम विल बी O1 CQ N1, so be the acceleration polygon in that case. That is only one difference between uniform velocity of connecting rod and non-uniform velocity of connecting rod. So important point as far as MCQ is concerned on Klein's velocity and acceleration diagram is, first of all it is used for reciprocating engine mechanism only. Second, अगर किसी भी लिंक का वेलोसिटी फाइंड करना है तो उसके लेंथ से ओमेगा को मल्टीप्लाई करना है, देन दैट विल बी इट्स वेलोसिटी। सो हियर OCM is a velocity diagram, OCQN it will be a acceleration polygon। एक्सेलरेशन में हमको ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करना है हर टर्म को, किसी भी टर्म का अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो इट्स इक्विवेलेंट लेंथ मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, दैट विल बी एक्सेलरेशन। एंड वन मोर थिंग दैट वी हैव कंपेयर्ड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विथ velocity and acceleration diagram of relative velocity and acceleration method. Okay, so this is all about Klein's construction method. Hope it is clear. So based on today's lecture, some of the MCQs. So first, the component of acceleration parallel to the velocity of the particle at given instant is called as, so हमें पता है parallel component to the velocity is nothing but tangential component. So options है radial, tangential, Coriolis and none of the above. So radial तो perpendicular to velocity रहेगा, this tangential will be parallel to the velocity. Coriolis component, it is perpendicular to the link, so it is not the answer, none of the above. So answer will be tangential component, B, tangential component will be the answer. Second, the Coriolis component of acceleration is taken into account and options are slider crank mechanism, 4-bar chain mechanism, quick return motion mechanism and none of the above. So we have seen that Coriolis component is applicable only for quick return motion mechanism where simultaneously two motions are happening, one is turning and another is sliding. So answer will be definitely quick return motion mechanism, C. Okay, so third is a slider sliding at 10 cm per second on a link which is rotating at 60 rpm is subjected to the Coriolis acceleration of magnitude. आपके ऑप्शन है 40 पाई स्क्वायर, 0.4 पाई, 40 पाई, 4 पाई, यूनिट रहेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So it is asked to find Coriolis component of acceleration. So its formula is 2v omega. So v दिया है फॉर्मूला में 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो 2 इंटू 10 इंटू ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एन अपॉन 60, एन आपको दिया है 60, सो 60 कैंसिल होगा, 2 पाई इंटू 10 इंटू 2, सो इट विल बी 40 पाई, यू कैन कैलकुलेट. सो आंसर विल बी 40 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So such a small calculations will be asked in MCQs, right? So hope it is clear. So if you like this video, you can share and subscribe. So thank you for watching.